हेलो एवरीवन। तो आज मैं बात करना चाहूँगा वट एवर द थॉट्स आर इन माई माइंड रिलेटेड टू द मार्केट कंडीशन एंड द फ्यूचर। अभी रिलायंस आईसीआईसीआई एंड एचडीएफसी के रिजल्ट्स ऑलरेडी बाहर हैं एंड दे आर प्रीटी गुड इन अलाइनमेंट विद द मार्केट एक्सपेक्टेशंस। इन दिस वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग व्हाट हैज हैपनिंग अंटिल नाउ, व्हाट वाज द ग्लोबल सिनेरियोज अंटिल व्हाई द मार्केट डिडंट गो अप एज ऑफ नाउ, आर these factors sorted, and if these factors are sorted, what will be the impact of the coming future? So let's start. Today is Saturday 19th of July। तो जैसे हमें पता है कि आज मार्केट हैवीवेट्स रिलायंस, आईसीआईसी बैंक एंड एचडीएफसी के रिजल्ट्स आने वाले थे और ये तीन शेयर्स मेक अराउंड 30% ऑफ निफ्टी वेटेज। सो रिजल्ट्स ऑफ थ्री शेयर्स टेल अ लॉट अबाउट कि हमारी इकोनॉमी कैसी चल रही है और आगे कैसी चलने वाली है। येस्टरडे द मार्केट रिएक्टेड टू एक्सिस बैंक रिजल्ट्स जो कि एक्सपेक्टेशन से नीचे आए। द पैट ऑफ एक्सिस फेल बाय 4% और जो प्रोविजंस हैं वो भी काफी हाई थी ड्यू टू बैड एसेट्स और द बैड। बट आज जो रिलायंस, आईसीआई बैंक एंड एचडीएफसी के रिजल्ट्स आए हैं दे आर पार विद द मार्केट एक्सपेक्टेशंस। Talking about Reliance, if you exclude 8,900 crore Asian Paint one-time profit, the results are pretty good. The profits are up 25%. ICICI Bank के also profits are up 15% and HDFC Bank के profits are also up 12%. Although HDFC की provisions 14,000 करोड़ बन गई हैं इस क्वार्टर में as compared to 3,000 crore last quarter. Now results of three heavyweights will inculcate good thoughts in the mind of investors. Since last 6 months markets were very weak and let's go through the reasons why they were so weak and let's talk about why those reasons don't apply anymore. So first thing which we were saying until now, जो FIAs थे they were selling continue, वो pattern already since last month have started to break और अभी देखा जाए FIAs have intermittently have been buying also. And the second reason was Trump tariff. Since market को already react कर चुकी है Trump tariffs को and now Trump tariffs are also out of talks, so market won't be reacting in the same manner to the same thing. The another thing was Iran and Israel war. That is also out of equation now. और वो हमारे लिए अच्छा क्यों नहीं था? Because that could have been expensive crude prices. Since India is a significant crude import economy, so that could have impacted the Indian economy. The next thing is doubts around the company's results and profits. और ये जो doubts थे they turned very negative thanks to the Axis Bank results, but that will also be out of picture thanks to the good results by the market heavyweights today. And global market currently are also all time high. The value of INR has also been depreciating since some time. तो उससे क्या होता है कि जो FIAs का जो पैसा ऑलरेडी इंडिया में इन्वेस्टेड है that will also be depreciating at the same time in the same manner as the USD is appreciating. तो अगर USD 2% स्ट्रांग हुआ है तो उनका पैसा अगर इंडिया में इन्वेस्टेड है वो 2% वीक हो चुका है। ऑल्सो द रेपो रेट्स हैव बीन कंटिन्यूसली हाई फॉर लास्ट 2-3 years। तो वो भी एक रीजन था कि जो इकोनॉमी में बूम आना चाहिए वो नहीं आ पाता क्योंकि स्पेंडिंग ट्रिगर नहीं हो पाती। अनदर थिंग इज CRR वाज आल्सो ऑन द हायर साइड। उससे क्या होता है बैंक्स को एडिशनल पैसा अपने पास रखना पड़ता है एंड वो पैसा नहीं तो बैंक्स इन्वेस्ट करके या लोन देके दूसरों को दे कैन अर्न समथिंग ऑन टॉप ऑफ इट। लेट्स सी व्हाई दीज फैक्टर्स आर सॉर्टेड। FIAs have already stopped the trend of selling. Trump tariffs out of talks. ईरान एंड इसराइल वॉर इज ऑल्सो सीम्स टू बी सॉर्टिंग आउट और जो रिजल्ट्स आए हैं कंपनीज के दे आर ऑलरेडी गुड। द ग्लोबल मार्केट करंटली आर ऑल्सो ऑल टाइम हाई। तो that leaves the Indian Nifty 50 or Sensex behind. Over the period of time, the Indian market is supposed to follow the global trend and we expect कि वो ऐसा ही हो. And the value of INR has also been stabilized. इससे क्या होगा जो FIAs हैं उनके और कॉन्फिडेंस आएगा इंडिया में इन्वेस्ट करने का। Also the repo rates have been started reducing. तो इस फैक्टर का बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा इंडियन इकोनॉमी पे। इससे क्या होगा जो लोन्स हैं वो और चीप हो जाएंगे। पीपल विल स्टार्ट टेकिंग मोर लोन्स, दे विल स्टार्ट स्पेंडिंग मोर, दे विल स्टार्ट टेकिंग हाउस लोन्स, कार लोन्स। उससे क्या होगा जो कंपनीज हैं उनके प्रॉफिट्स और बढ़ेंगे, जॉब्स और क्रिएट होंगी। तो जो रिपल इफेक्ट होता है वन आफ्टर अनदर will get triggered, and thanks to this if the company's revenues will go up, their profits go up, the valuation of companies will go up, hence the Nifty or the Indian economy is also supposed to go up. Now these things are out of the picture and now we can talk about market PE ratio. Market PE ratio अगर आप देखोगे we are on the lower side of 5-year range, we are on the average levels of 2-year range and average level of 1 year. Although 3 and 6 months we are little bit on the higher side. We know that in April due to Trump tariffs the market was already trading very low and as we discussed before there were many factors which were creating the panic among the investors जिसकी वजह से मार्केट और भी कम थी, PE रेशो और भी कम था, but there were uncertainty. तो उसकी वजह से the PE ratio similar to 3 months and 6, but now those factors have been out of the picture. Now
Current results also align with the market expectations. From this point, we should definitely break the October last year all-time high on the back of all-time high revenues. And there is another thing, since we are moving towards the lower repo rate and cheaper loans, the high liquid and cash-rich environment should also support the Nifty. This is my take going towards rest of the year. I also want to add one more thing. ये जो fear and greed index है, ये अभी global markets का है, S&P 500 and Dow का. तो उससे क्या है? We can say that global markets are little bit overbought. लेकिन if you talk about the fear and greed index of Nifty, we can still see it is in the fear zone. So these are the good time to invest when the mood of the people is in the extreme fear or fear zone. Slowly जब market ऊपर की तरफ move करेगी, this will come to greed and then extreme greed section. तो ऐसे टाइम पे like that would be the good time to exit and book the profits which you will be earning by entering at these times. So going by all these factors, I will be little bullish in taking my positions. I will be investing, and also the trades which I will be taking, that will be more bullish priced. And we can also consider taking a long positional bets. So thank you everyone for listening to me. I hope that it will give a better picture to you and help you in your investment journey, and going forward you make a good profit. If you like the content, please share and subscribe so that it helps me and other people who are looking for the similar information.